Hello everyone, welcome to the CT 360 degrees current affairs session. How are you guys doing? I hope you are doing well. So in this series we cover current affairs relating to GA and ESI part of your syllabus. We are here particularly targeting NABARD and RBI, but in case you're preparing for any other examination, then also these sessions are important for you since we cover it on day-to-day basis. And today we will be covering it from 30th to 31st of July. We here cover all the important sources like the PIB, Hindu and the Business Standard, so that all you need to do is watch these videos and your current affairs, they will be covered. As again, I would like to tell you that revision is very important when it comes to current affairs because you need to retain all these information, all the facts that we are providing you, and you will only be able to retain them if you are revising it again and again. So whenever you have time, please keep on revising these sessions. You can download the PDFs and from that PDFs you can revise it. ठीक है जी, चलिए. Now let's find out that what are the topics that we will be covering today. The first is Gemini Sparks. We will be covering it under Science and Technology under GA. Then India targets 5% share of the global toy market by 2032. We will be covering under the government initiatives. Then Pankaj Tripathi is to receive the Artist of Distinction honor, the IFFM 2026. We will be covering it under awards. Then two topics we will be covering from the ESI. The first is the Danveer initiative, and then it is FASTag codes for the public examination paper leak cases. So I hope you are clear with all the topics that we will be covering. First, let's see that what was the answer for the last homework question that I provided you. So the question was asked, what is the theme of the World Hepatitis Day 2026? And the answer to this question was option A, that is hepatitis. Let's break it down. I hope you are clear with this as well. ठीक है जी, चलिए. Now let's quickly start with the topics today. First is the Gemini Spark. So Gemini Spark क्या है? Gemini Spark is always on 24/7 personal AI agent. ठीक है? So it will be working 24/7. It is a personal AI agent that is introduced by Google. So you know, as the normal chatbots, आप उसमें कोई prompt डालते हैं, you ask them a question and they answer it. As different from that, ये जो Gemini Spark है, what it is going to do is it is always going to be on your computer, even if your laptop is shut down, even if your phone is off, even then it is going to be working. ठीक है? It will be working in the background, and after attaining some permissions from you, it will also be able to do some tasks. For example, let's just say that you have given the permission कि आप उसको integrate कर सकते हैं अपने Gmail account से. Then in that case वो क्या करेगा, it will flag the important emails that you have received, उसकी summary भी बना देगा, and जो unimportant होंगे, जो commercial emails हमारे पास आते हैं, advertisement वाले आते हैं, उनको वो filter out कर देगा. So that is what is Gemini Spark. It is a agentic का मतलब that it's different from the chatbots that we use. ठीक है? It's a agent that is 24/7 available agent जो खुद ही काम करेगा in the background. ठीक है? So it will learn from your behaviors. It will learn that how you use your internet. ठीक है? What are the tasks that you need to do, and it will be doing tasks on your behavior on your behalf. ठीक है? How it works, it operates only under the user's direction. So you have to give them permission. Users, they can choose which app to connect. So for example, I've given you the example of Gmail can work proactively on the task. ठीक है? तो rather than working reactively, जब आप पूछें सिर्फ तभी नहीं, proactively it will be working, designed to bring together the different services including generating audio and images. Sensitive actions, they require the user confirmation, such as sending money, sending emails, using the browser, or deleting anything. So all these tasks, they will be done once they have received your permission. And Google emphasizes multiple lines of defense to keep the users in control. Okay? So who is introducing this? Gemini Spark. Gemini Spark, it is being introduced by Google. Clear? Chaliye. Now, India targets 5% share of the global toy market by 2032. Right now, we are less than 1.9%. But what is our target? It is to reach 5% share of the global toy market by 2032. Why are we doing this? Because India feels that toy market because India feels the toy market is the new great opportunity that we can use. Okay? So that is why we have introduced the task force for the India's toy sector. Now, what is task force for India's toy sector? See, task force, it is basically a body of experts. ठीक है? Government officials की एक body होती है whereby they will be providing us the technical support. ठीक है? They are not providing you any subsidies. They are not providing you any money or donations. They are not giving you grants. बल्कि they are going to be giving you the expertise on how you can strengthen your toy manufacturing or toy exports.
ठीक है, तो आपको ये पूरी हेल्प दी जाएगी, टेक्निकल सपोर्ट देगी, पर्सनल्स की हेल्प दी जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू द MSMEs or the business owners, they will be able to generate income, they will be able to expand their business in the toy market. ठीक है, फोकस एरियाज क्या है? तो इंटीग्रेशन ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ आपको जोड़ा जाएगा, स्ट्रेंथनिंग द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, एड्रेसिंग द वैल्यू चेन बॉटलनेक्स, क्या बॉटलनेक्स हैं उनको हम रिड्यूस करेंगे, उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, creating the skilled workforce and the employment opportunity, promoting design and innovation, and improving ease of doing business. ठीक है, so this is a task force that has been created. Alongside, there is also one playbook that has been released. What is a playbook? Playbook basically step by step guide है. It's a step by step guidebook on how the MSMEs, manufacturers, startups, investors, they can गो इन दिस बिजनेस. ठीक है, वो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट, आप ऐसे इसको बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, दिस इज द मार्केट वेयर यू कैन सेल इट, ऑल दोज थिंग्स दे हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू. ठीक है, सो दिस ऑल्सो हैज बीन प्रोवाइडेड. ये सब क्यों किया जा रहा है? बिकॉज हमारा एक ग्लोबल टारगेट लिया है, हमने अपना नेशनल टारगेट लिया है, दैट इज 5% शेयर ऑफ द ग्लोबल टॉय मार्केट. वी वॉन्ट दैट 5% शेयर शुड बी इंडिया शेयर. ठीक है, गवर्नमेंट इज पुशिंग दैट BIS, आपको पता है दैट क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है ये बॉडी, तो BIS सर्टिफिकेट सर्टिफाइड टॉयज हों. ठीक है, क्लस्टर डेवलपमेंट, MSMEs एंड स्टार्टअप्स, एंड फोकस ऑन द लोकलाइजेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल quality standards, branding, sustainability and exports. ये सब basically why we are doing it. We are doing it. The vision क्या है? तो vision basically is that just make in India से now let's move forward. Make in India हमने बहुत कर लिया, now let's move forward. Move forward का मतलब यहाँ पे क्या है? That we need to design in India. We need to innovate in India. Brand India का हो ताकि एक global recognition, एक global platform पे India को recognition मिले under the toy market as well. ठीक है? Clear? चलिए, मूविंग ऑन. Now, Pankaj Tripathi will be receiving the Artist of the Distinction honor by the Indian Film Festival of Melbourne. ठीक है, तो ये एक global appreciation है that is given to the actors who show exceptional contributions to the Indian cinema. ठीक है, with their versatile characters, and that is why who has been chosen this year, who is given this going to be given this award. This is Pankaj Tripathi. ठीक है, we all know Pankaj Tripathi. He comes from Bihar. Some of the notable projects, Gangs of Wasseypur, Mirzapur, Mimi, you must have seen him. ठीक है, एंड येस ही इज अ नेशनल फिल्म अवार्ड विनर एज वेल. ठीक है, तो नेशनल अवार्ड इनको ऑलरेडी मिल चुका है. इज अ नेशनल फिल्म विनिंग एक्टर एंड नाउ ही विल बी रिसीविंग द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में कौन सा अवार्ड मिलेगा? द आर्टिस्ट ऑफ द डिस्टिंक्शन ऑनर. ठीक है, क्लियर है जी. चलिए, नाउ इट इज दानवीर इनिशिएटिव. व्हाट इज दानवीर? नाम से ही समझ आ रहा है, दानवीर का मतलब समथिंग रिलेटेड टू डोनेशंस. बट क्या डोनेट हो रहा है? लेट्स जस्ट फाइंड आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल, Ministry of Panchayati Raj, in collaboration with the NIC, that is the National Informatics Center, and DigiHeart, they have launched the Danveer initiative. See, India में ना there are a lot of gram panchayats, but they are still working without computers. 2.5 lakh gram panchayats है हमारे यहाँ पे, but आज भी many of those they are working without the computers. So that is why to upgrade the digital infrastructure of these gram panchayats, they have launched this project called Danveer initiative. ठीक है, सबसे पहले the tagline is give back to your village. What is going to happen is, for example, there is any citizen, there is any businessman, startup है, कुछ भी है, कोई NRI है, they want to donate, ठीक है, to our villages. In that case, a website has been made. ठीक है, एक्चुअली इट इज़ अवेलेबल वाया मेरी पंचायत ऐप. ठीक है, तो इस ऐप पे एक इंटरफेस बनाया गया है जहाँ पर जाके व्हाट दे कैन डू इज दे कैन सिलेक्ट द रीजन इन विच दे वांट टू डोनेट. क्या डोनेट कर रहे हैं ये यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डोनेट कर रहे हैं, दैट इज कंप्यूटर बंडल्स. तो कंप्यूटर बंडल्स ये कैसे डोनेट कर रहे हैं? यू गो टू दिस ऐप एंड यू सिलेक्ट द रीजन इन विच यू वांट टू डोनेट. वहाँ पर आपको ऑलरेडी pre-approved computers दिखाए जाएंगे that these are the quality computers that we need. If you are okay with it, you make the payment. ठीक है, आप डायरेक्टली इस पे पेमेंट करेंगे and it will be delivered. वो डायरेक्टली डिलीवर हो जाएगा and you will receive the certification. So this is how it works. So they are not going to be asking you for money directly. They are asking just अगर आप चाहते हैं, if you want to donate, then in that case what you can do is you can provide us the donations in the form of computers. ठीक है, आप computers provide कर सकते हैं हमें, and this is so that we can digitalize our system because now everything is going online. Online तो कब का चला गया, अब तो we are a step forward, we are into AI, but still there are some regions, there are many villages जो आज भी कंप्यूटर के बिना they are working on the paper book, they are working with the pen and paper. So all this needs to be done.
ठीक है. सो दैट इज वाई दे encourage participation from the citizens including the Indian diasporas to contribute their native villages. ठीक है, क्लियर है. So this has been integrated with DigiHeart. DigiHeart वही जहाँ पर the pre-approved computers they are shown. This is a marketplace. ठीक है, तो वहाँ से हमें इसमें भी हमने इंटीग्रेट किया है. ठीक है, क्लियर है. चलिए. Now the last news is fast track codes for the public examination paper leak. So as you already know that there has been a lot of protests regarding this also, क्योंकि नीट का जो पेपर था 2026 का वो क्या हो गया था, वो लीक हो गया था. ठीक है, सो दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है दैट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स दे आर गोइंग टू बी मेड फॉर स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशन एंड दी स्पीडी ट्रायल्स ऑन द एग्जामिनेशन पेपर लीक. ठीक है, तो बेसिकली इट विल गारंटी कि हम स्विफ्ट एंड स्ट्रेंजेंट पनिशमेंट दे सके टू एनीवन हु इज इन्वॉल्व्ड इन दी पेपर लीक्स. ठीक है, सबसे पहले अब आपको हमें ये पता होना चाहिए दैट द दिल्ली हाई कोर्ट दे हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट. उन्होंने ऑलरेडी कर लिया. Alongside it, there also has been a bill that has been passed by the parliament, जो कि है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट. ये 2024 में अमेंडमेंट बिल है. ठीक है, तो अमेंडमेंट बिल ऑफ 2026 हैज बीन पास्ड बाय आवर पार्लियामेंट. ठीक है, क्या अमेंडमेंट्स होंगी वो भी हम आगे कभी देखेंगे, बट अभी के लिए इट हैज बीन पास्ड बिकॉज ऑफ दिस ओनली. फास्ट ट्रैक कोड भी बना दिया गया है एंड नाउ द अमेंडमेंट बिल हैज आल्सो बीन पास्ड बाय आवर पार्लियामेंट. ऑल द पेंडिंग केसेस अंडर द एक्ट दे वर ट्रांसफर्ड टू द स्पेशल कोर्ट फॉर स्पीडी डिस्पोजल. फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या होते हैं? दे आर अ स्पेशल कोर्ट जो कि एक ही फील्ड ऑफ केसेस से डील करते हैं. दे हैव स्पेशल जजेस. ठीक है, जो कि और किसी भी केस से डील नहीं करेंगे इफ दे आर अ special court of the examination leak. They are only going to be dealing with the cases of the examination leak और कोई भी केस से नहीं डील करेंगे. क्यों ये किया जाता है? क्योंकि हमने एक डेडिकेटेड कोड बना दिया है. रेगुलर कोर्ट्स दे हैव बैकलॉग्स, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड लैक्स ऑफ केसेस बैकलॉग में पड़े हैं. दे डोंट हैव द टाइम टू व्यू इट. सो दैट इज वाई अ स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है जहाँ पे स्पीडी हमें ट्रायल चाहिए हो एंड स्पीडी हमें वर्डिक्ट चाहिए हो. ठीक है, सो यहाँ पर रादर देन वेटिंग फॉर मंथ्स एंड मंथ्स फॉर योर टर्न और योर डेट, क्या होता है दैट ऑलमोस्ट एवरी डे आपकी हियरिंग रखी जाती है एंड इसमें एक टाइम लिमिट दी जाती है दैट इतने टाइम में यू विल बी able to get the result, you will be able to get the verdict. And for this fast track courts for the paper leak, the time limit that has been decided is 3 months. So one case it has to be decided within these 3 months. ठीक है, सब केस के लिए जो मैक्सिमम लिमिट दी गई है वो है 3 months. ठीक है, अगर हम अगर हम बैकिंग की बात करें, हम जुडिशियल बैकिंग की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल में कहाँ लिखा गया है? सो दिस इज अंडर आर्टिकल 21. ठीक है, तो ये नबार्ड में हो सकता है, पूछ लें. दैट इज वाई मैं आपको ये लेके आई हूँ. तो व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट दे आर सेइंग इज दैट स्पीडी ट्रायल इट इज आवर फंडामेंटल राइट. कौन सा फंडामेंटल राइट है? इट कम्स अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. दैट इज आर्टिकल 21. ठीक है, तो कोर्ट्स ने काफी बार बोला है दैट दिस इज आवर फंडामेंटल राइट एंड अंडर दैट हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाते हैं. देयर आर मेनी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन मेड, बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम एक एग्जामिनेशन लीक के ऊपर बना रहे हैं. ठीक है, क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? अगर आपको प्लीज कोई भी कंफ्यूजन होगी प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस. ठीक है, चलिए. नाउ लेट्स फटाफट लेट्स सी व्हाट आर द questions that I have brought for you. The first is about the Danveer initiative. So Danveer, it is a transparent, verifiable and end-to-end digital platform that is aimed at strengthening the digital infrastructure of eligible gram panchayats. It is available through the Meri Panchayat app. It allows individuals and organizations to donate standardized quality verified computer bundles. The platform, it is integrated with DigiHeart, enabling donors to select state-specific pre-approved computer bundles. Donors, they can digitally track their contributions from dispatch to installation and receive a digital certification of appreciation. The initiative encourages participation from citizens, including the Indian diasporas, to contribute to their native village. So what do you think is the right answer here? The right answer is that all of these statements, they are correct. So D, that is all of these statements, they are correct. Now, question number 2, it's a homework question for you. Do let me know what you think is the right answer. The question for you is Gemini Spark, a round the clock personalized AI powered agent, has been introduced by which company? Your options are Microsoft, OpenAI, Google, Meta or Amazon. So do let me know in the comment section below what do you think is the right answer. And for
more such current affairs, please subscribe to our channel. And that was all for today. Thank you for watching. If you want the PDF of this session, it will be available to you on our Telegram channel, and the link to that Telegram channel is in the description box below. So if you have any queries, any doubts, please ask me in the comment section, and also please let me know what is the right answer to the homework question that I have asked. Now I will see you on Tuesday. Please keep on revising. Thank you everybody. Bye bye.